बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हमने स्पेशल फंक्शंस की एक स्पेशल टाइप पढ़नी है जिसे हम गैमा फंक्शन कहते हैं। तो गैमा फंक्शन बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में उसको डिफाइन करते हैं और आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल ऑलवेज गिव्स एरिया अंडर द कर्व। सो गैमा फंक्शन भी एक किस्म का एरिया फंक्शन ही है। इसको हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे और डिफाइन कैसे करेंगे। गैमा फंक्शन डेफिनेशन। सो सबसे पहले हमने गैमा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़नी है। गैमा फंक्शन denoted by gamma n. Gamma is read as gamma n, where n is normally a positive number, and is defined by a definite integral as gamma n is equal to 0 to infinity, this is limit 0 to infinity e power minus x power n minus 1 dx। देखिए स्पेशल फंक्शन है, इसमें फंक्शन किसका है, n का, लेकिन जो डिफरेंशियल है वो x के लिहाज से, लेकिन आंसर n में आएगा क्योंकि x पावर n माइनस 1। इट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये लिमिट किस पे है, x पर है। जब इसको हम इवेलुएट करेंगे जो आंसर आएगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ n, दैट्स व्हाई रिटन एज गामा n। जो नंबर जहां पे आएगा वही नंबर यहां पे आएगा। फॉर एग्जांपल, if we have to find gamma 7, then this will be defined as 0 to infinity e power minus x power 7 minus 1 is 6 dx. Similarly, if we have to find gamma 6, this will be equal to 0 to infinity e power minus x power 5 dx। तो यहाँ पर जो भी पावर होगी उससे एक नंबर यहाँ पर ज्यादा आना है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। समझ आ गई? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गैमा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x पावर n माइनस 1। यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वही गैमा फंक्शन उसके ऊपर। क्लियर? आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा फंक्शन। अब हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है which will be helpful in solving numericals related to gamma function. Properties of gamma function. हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है गैमा फंक्शन की और उनका हम प्रूफ भी करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है gamma 1 is equal to 1। gamma 1 is equal to 1। सेकंड प्रॉपर्टी जो आज हमने प्रूव करनी है,
go ahead. Gamma n plus 1 is equal to n, gamma n is equal to n factorial. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बार बार हम यूज करते हैं. तो दिस इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन factorial function and gamma function. You know, factorial function is defined as n factorial is always equal to n into n minus 1 up to so on up to 3 to 1. So this is the factorial function. Third is gamma n is equal to z power n 0 to infinity e power minus zx x power n minus 1 dx. So जो फिर देख लें n तो वही है डेफिनेशन वाला कि यहाँ पर अगर z आएगा तो यहाँ भी z आएगा. बेसिकली जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है कि गैमा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स एक्स पावर n माइनस 1 dx, वो इसी की स्पेशल टाइप है. अगर हम z को 1 पुट कर दें तो वी विल गेट दैट, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे बकायदा. फोर्थ है गैमा n इज इक्वल टू 0 टू 1 log of 1 over y whole power n minus 1 dy. And fifth is gamma n plus 1 is equal to 0 to infinity 0 to infinity e power minus y and y power 1 over n dy. So this is the fifth property. तो ये 5 प्रॉपर्टीज है जो हमने प्रूव करनी है. पहली फिर लिख लो. वन इज gamma 1 is equal to 1. Second is gamma n plus 1 is equal to n gamma n, which is equal to n factorial, and you know n factorial is equal to n into n minus 1 n minus 2 up to 3 to 1 मल्टीप्लाई करते हैं. थर्ड इज n gamma n is equal to z power n, that is constant, 0 to infinity e power minus zx x power n minus 1 dx. Fourth is gamma n is equal to 0 to 1 log of 1 over y whole power n minus 1 dy. And fifth is gamma n plus 1 is equal to 0 to infinity e power minus y whole y power 1 over n dy. So these are the 5 properties which we will prove today. सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, which is gamma n is equal gamma 1 is equal to 1. हम प्रूव करते हैं. हाँ जी, प्रूफ के लिए हमने ये प्रूव करना है. हम कैसे प्रूव करते हैं देखें. सबसे पहले हमने इसको शुरू करना है बाय डेफिनेशन. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ gamma function, we can write gamma n is equal to 0 to infinity e power minus x x power n minus 1 dx. This is the definition of gamma function. We have to find the gamma 1. Now put n is equal to 1. For n is equal to 1, we will have gamma 1 will be equal to 0 to infinity e power minus x x power 0 dx, because 1 minus 1 is 0. Now x power 0 is 1. Therefore we will have
gamma 1 equal to 0 to infinity e power minus x dx. We have to evaluate this integral. This is very easy, basic integration. We know that e power minus x integral is e power minus x over minus 1. So minus will be here. This minus is power derivative. So 0 to infinity. We'll put the limit e minus e power minus infinity minus minus plus e power 0. E power minus infinity is 1 over e power infinity plus e power 0 is 1. Now, this is equal to 1 over infinity. 1 over infinity is 0 plus 1 is equal to 0 plus 1 is equal to 1. So we have proved that gamma 1 is equal to 1. फिर देख लें हमने शुरू कहाँ से किया है, डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन से. फिर हमने n को 1 पुट कर दिया. जब n को 1 पुट करेंगे तो e पावर माइनस x, x पावर 0 हो जाएगा. x पावर 0 is 1, so we will get e power minus x. Integral of e power minus x is minus e power minus x. Now we apply the limits. Minus e power minus infinity हो जाएगा, minus e power 0. E power minus infinity is 1 over e power infinity is 1 over infinity. 1 over infinity is 0, so we get 0 plus 1. 0 plus 1 is 1, so we prove that gamma 1 is equal to 1. Equal to 1 over infinity. 1 over infinity is 0 plus 1 is equal to 0 plus 1 is equal to 1. So we have proved that gamma 1 is equal to 1. फिर देख लें हमने शुरू कहाँ से किया है, डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन से. फिर हमने n को 1 पुट कर दिया. जब n को 1 पुट करेंगे तो e पावर माइनस x, x पावर 0 हो जाएगा. x पावर 0 is 1, so we will get e power minus x. Integral of e power minus x is minus e power minus x. Now we apply the limits. Minus e power minus infinity हो जाएगा, minus e power 0. E power minus infinity is 1 over e power infinity is 1 over infinity. 1 over infinity is 0, so we get 0 plus 1. 0 plus 1 is 1, so we prove that gamma 1 is equal to 1.